सत श्री अकाल एबीपी साझा देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं चरणजीत कौर ते सब तो पहला गल यूक्रेन और रूस के दरमियान जो जंग चल रही है ये जंग लगातार जारी है तो रूसी फौजी ने जो कीव दे विच दाखिल हो चुके हैं। हालात दिन ब दिन जो बदतर होंदे जा रहे हैं। चौथे दिन भी वड्डी गिनती दे विच जानी नुकसान होया, बमबारी जो है लगातार की जा रही है। हालांकि जो यूक्रेन के लोग ने उन्होंने दे वल्लों भी हथियार चुके गए हैं तो राष्ट्रपति दे वल्लों आख्या गया कि वह आखिरी साह तक लड़ाई लड़नगे। तो उधर यूके दे वल्लों भी हुण उन्हां दी शलाघा की गई है ते नाल ही भरोसा जताया गया है कि जो भी मदद की लोड़ होगी भेजी जाएगी ते नाल ही जो बहादुरी यूक्रेन के लोग दिखा रहे हैं उसकी शलाघा हो रही है। I've just come off the phone again to President Volodymyr Zelensky of Ukraine, and let's be in no doubt, things are not going all the way of President Putin. Very far from it. The Ukrainians are fighting heroically and in some places with great success, as many of us thought they would, because they're a great country and a very brave country. But as you rightly point out, there are some terrible atrocities being committed, and there will be some very grim days ahead for Ukraine. We've got to do everything we can to change the heavy odds that Ukraine faces and to help them. And so that's why we're sending humanitarian supplies, we're sending financial supplies and military supplies as well. I think it's very important that we do that. The UK was the first European country to send military aid to Ukraine. Last night, many other countries joined in pledging to send military assistance. You're starting to see that grow. What we need to do now, and you ask, should we do more? The answer is yes, and we need to make sure that we apply those much tougher economic sanctions, including SWIFT. And what's starting to happen is that the horror of what is unfolding in Ukraine is becoming clear to Western audiences, and that is in turn putting huge pressure on Western politicians. We've got to act together, and we've got to do more. Of course we're going to take refugees. This country's had a historic and proud role in taking refugees from all conflicts. And if you think what we did in Afghanistan, for instance, the UK was way out in front. I'm aware that there's some fake news on the internet about that, and I really want to knock that on the head. The UK is way out in front in our willingness to help with refugees. We've sent 1,000 troops to the theatre to be ready to help with the influx, and of course we will help people fleeing in fear of their lives. I think we have to face the hideous reality that the diplomacy, as far as President Putin was concerned, was a charade. He never really intended to alter his course. You read the article that he wrote many months ago. It was clear that he's attached to a weird, semi-mystical view of Ukraine as part of Russia. And that is a view that the Ukrainian people fervently, passionately reject. And they're showing that they will fight to reject it. Our job now is to help them, to help change the very heavy odds that they face. And that's why we're sending the support that we are. I think that what you've seen just today is more countries joining the call of the UK to use SWIFT. SWIFT is the mechanism that stops people making payments to Vladimir Putin's Russia. It's incredibly important for tightening the ligature, the economic ligature around the Putin regime. And today you've seen more and more countries, France and others, coming forward to say that they will not block a banning, a boycott of SWIFT. I think it's inconceivable to imagine that, I mean, it's a sad thing, because I don't think we've had a situation like this for a very, very long time. But it's inconceivable to me to imagine that normal sporting relations with Putin's Russia can continue. यूक्रेन तो तबाही का मंजर लगातार सामने आ रहा क्योंकि बमबारी की जा रही है तो हुण चरनोबल पावर प्लांट ते भी हमला किया गया है, तहस नहस इसनूं कर दिता गया। इस तो पहला जो फ्यूल सेंटर है यूक्रेन दे विच उसनूं भी तबाह किया गया सी, जिस तो बाद स्थिति लगातार संजीदा हुंदी जा रही है। तो हुण यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दे विच जो यूक्रेन के राजदूत ने उन्होंने फिक्र जाहिर की है ते नाल ही मदद की अपील भी। We have those groups
throughout Ukraine. Our brave citizens and our armed forces are finding them, and we have regular reports on them being caught, detained, and destroyed. According to reports obtained by Ukrainian security service, the occupant forces are also handing out actively gas masks to local militants and the Russian military in Donetsk Oblast. So we, are making this information public to warn that there might be a possibility of provocation, and that there are different versions of what could they do, up to blowing up some industrial tanks with chemicals. And as the result of Mr. Putin's ruthless decision to send his soldiers to this senseless, unjust, unprovoked, and totally criminal war, 3,500 Russian men will not be returning home. But we are absolutely appalled by the Russian crimes against humanity which we see throughout Ukraine. In the last 72 hours, the Russian army attacked kindergartens and orphanages. Right behind me today we have put the images of the horrific scenes of the Russian war in Ukraine and Russian war crimes. The Russian side attempts to hide its crimes against peaceful residents. With the Office of Attorney General of Ukraine, we are collecting all of this, we are recording all of this, we are preserving all of this, and we will immediately be transferring all of this to The Hague. Responsibility for these actions is inevitable, regardless of how much time it will take us to defend our country. We ask from the United States and from all of our friends and allies to actually ban Russia from everywhere. And of course, disconnecting them from SWIFT is one of the, we believe, very effective actions. And we are also discussing all other potential sanctions which we are positive Russia deserves. Because being a terrorist state, attacking a sovereign country without any reasons, without any pretext, and more importantly, attacking civilians. I mean, I think everyone saw yesterday the footage of the rocket getting into a residential complex in Kiev. We will defend our home, we will not surrender, and we need all the support that we can get from the free world, because we are fighting for the right cause. We are defending our homes, we are defending our families, we are defending democracy, we are defending our choice to be sovereign, but we are also defending Europe. We are at the far front of this fight with the autocratic, crazy regime that we have to the east of us. Please pay attention that the rockets that are sent to destroy our troops, and that the military personnel and tanks and all the machinery that is coming, they are not only coming from the east. They are coming from Crimea, which is illegally occupied and by Russia, but they are also coming from Belarus. And Belarus is also responsible for this attack on Ukraine. We intend to defend our country, and every precautions are taken in order not to allow them to get to our government. At the same time, President has made a decision to stay in Kiev, to stay with people and defend the country while being in Kiev and being in the country. So that is why we cannot allow Kiev to be taken. Only during the last couple of hours, a number of countries announced that they will support us in addition to the support we are getting from the United States by additional weapons. Estonia, you name it. Germany, we just had a news that after many discussions before, Germany also decided to provide Ukraine with the defensive weapons. So it's Europe and transatlantic community, I should say, is very much united on this. We just need it faster so that we can save more lives. रूस ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਜੋ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮੁਲਕ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਈ ਮੁਲਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰੂਸ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। Decision to pursue his aggression against Ukraine
is a terrible strategic mistake, for which Russia will pay a severe price for years to come. NATO allies and the European Union have already introduced significant sanctions, and many of our partners around the globe have joined us. We must stand ready to do more, even if it means we have to pay a price, because we are in this for the long haul. At the same time, the Russian people must know that Kremlin's war on Ukraine will not make Russia more secure. It will not make Russia more respected in the world. It will not lead to a better future for your children. In response to Russia's massive military build-up over the past months, we have already strengthened our deterrence and defense. Yesterday, NATO allies activated our defense plans. And as a result, we are deploying elements of the NATO response force on land, at sea, and in the air, to further strengthen our posture and to respond quickly to any contingency. The United States, Canada, and European allies have deployed thousands of more troops to the eastern part of the alliance. We have over 100 jets at high alert, operating in over 30 different locations, and over 120 ships from the high north to the Mediterranean, including 3 strike carrier groups. There must be no space for miscalculation or misunderstanding. We will do what it takes to protect and defend every ally and every inch of NATO territory. Leaders today also made clear that we must continue our support to Ukraine. The Kremlin is trying to make NATO and the EU provide less support to our partners. ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। रूस दुनिया के खेत्रफल का 11% हिस्से वाला देश है, जदों कि यूक्रेन इस दे मुकाबले बेहद छोटा देश है। सवाल ये खड़ा होंदा है कि इन्ने छोटे देश यूक्रेन उत्ते रूस ने हमला क्यों किया है। सोवियत संघ टुटन बाद यूक्रेन स्वतंत्र देश बनया सी। इसकी सरहद उत्तर पूर्व और पूर्व विच रूस, उत्तर पश्चिम विच बेलारूस, पश्चिम विच पोलैंड नाल लगदी है। रूस की इच्छा रही है कि यूक्रेन उस तो दूर ना जाए, पर यूक्रेन रूसी प्रभाव तो खुद को बचाने लिए पश्चिमी देशों वाल झुक रही है। दसंबर 2021 विच यूक्रेन ने अमेरिकी दबदबे वाले दुनिया के सब तो ताकतवर फौजी गठबंधन नाटो नाल जुड़न की इच्छा जाहिर की सी। रूस ने इसका विरोध किया और लाखां की गिनती विच फौज यूक्रेन सरहद उत्ते भेज दी सी। यूक्रेन की रूस नाल 2200 किलोमीटर तो ज़्यादा लंबी सीमा है। रूस का मनना है कि जेकर यूक्रेन नाटो नाल जुड़दा है तो नाटो फौज यूक्रेन के बहाने रूसी सीमा तक पहुँच जाएगी। उधर अमेरिका भी आवाज़ नहीं आ रहा। सोवियत संघ टुटन बाद 15 तो ज़्यादा यूरोपी देश नाटो में शामिल हो चुके हैं। हुण वो यूक्रेन को भी नाटो में शामिल करना चाहता है। पुतिन चाहते हैं कि यकीनी बनाया जाए कि यूक्रेन नाटो का मैंबर ना बने। कानूनी तौर पर पक्का होवे कि नाटो होर अगे ना वधे। नाटो रूस दीयां हद्दां नेड़े हमला करने वाले हथियार तैनात न करे। नाटो अपनियां 1997 तो पहलां दीयां सरहदां ते वापस जावे।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਾਟੋ ਨੂੰ ਪੋਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬਾਲਟਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਐਸਟੋਨੀਆ, ਲਾਤਵੀਆ ਅਤੇ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਲੈਂਡ ਅਤੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਨਾਟੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। 30 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। रूस के आस-पास पूर्वी यूरोप च नाटो फौज एस्टोनिया 1150, लातविया 1650, लिथुआनिया 1600, पोलैंड 6500, रोमानिया 5500, बुल्गारिया 400। नाटो मैंबर किसी एक देश विरुद्ध हथियारबंद हमले की स्थिति विच एक दूजे की सहायता लई अगे आउण लई सहमत हुंदे ने। नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, एक मिलिटरी गठजोड़ है। 12 देशों ने 1949 विच स्थापना की सी। मुख देश अमेरिका, कैनेडा, यूके ते फ्रांस ने। नाटो के इस वेले 30 देश मैंबर ने। असल में नाटो का असल मकसद यूरोप में युद्ध तो बाद दे रूसी विस्तार के खतरे का मुकाबला करना सी। अमेरिका ते इसके सहयोगी नाटो तो यूक्रेन के दाखले रोकण तो ये कहते हुए इनकार कर रहे हैं कि एक प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र होने के नाते यूक्रेन को अपनी सुरक्षा गठजोड़ बारे फैसला करने लिए स्वतंत्र होना चाहिए, जबकि राष्ट्रपति पुतिन का दावा है कि पश्चिमी शक्तियां गठजोड़ की वरतों रूस को घेर ਲਈ कर रही ने। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 16 साल रूसी खुफिया एजेंसी KGB च काम किया। 1999 च बोरिस कोलों अहुदा छड्डण बाद राष्ट्रपति बने। 2004 च फिर राष्ट्रपति बने। 2008 तो 2012 तक रूस के प्रधानमंत्री रहे। 2012 ਵਿੱਚ फिर राष्ट्रपति बने। 2020 ਚ संविधान बदल के 2036 तक ਲਈ राष्ट्रपति रहने का रास्ता साफ किया। पुतिन उत्ते सत्ता बनाए रखने के लिए चोणां विच धांधली के इल्जाम लगते रहे ने। सवाल उठता है कि पुतिन रूस ਨੂੰ सोवियत संघ वर्गी महाशक्ति बनाना चाहते हैं ਜਾਂ मास्को की सत्ता उत्ते अपना 23 साल पुराना कब्जा पुख्ता करना चाहते हैं कि वो वाकई एक सुरक्षित रूस के लिए यूक्रेन ਨੂੰ नाटो तो दूर रखना ही उन्हां दा मकसद है। 1991 ਵਿੱਚ सोवियत संघ के टुੱਟਣ बाद 15 नवे देश बने सी, जिन्हां विच एक यूक्रेन भी शामिल सी। लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, मोल्दोवा, आर्मेनिया, बेलारूस, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, यूक्रेन, रूस, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। सत्ता संभालते ही पुतिन ने सोवियत संघ का हिस्सा रहे जॉर्जिया के खिलाफ 2008 ਵਿੱਚ युद्ध छेड़ दिता सी। उसके 2 इलाके साउथ ओसेशिया ਅਤੇ ਅਬਖਾਜ਼ ਨੂੰ स्वतंत्र ऐलान दिया अपनी फौज तैनात कर दी सी। 2014 ਵਿੱਚ यूक्रेन नाल भी पुतिन ने अजिहा ही किया। नतीजा यूक्रेन का हिस्सा रही क्रीमिया उत्ते कब्जा कर लिया सी। रूस ਅਤੇ यूक्रेन की फौजी ताकत। रूस कोल फौज 29 लाख है, जबकि यूक्रेन कोल फौज 11 लाख है। रूस फाइटर प्लेन 1511, यूक्रेन फाइटर प्लेन 98, रूस फाइटर हेलीकॉप्टर 1544, यूक्रेन फाइटर हेलीकॉप्टर 34, रूस टैंक 12240, यूक्रेन टैंक 2596, रूस कोल बख्तरबंद गड्डियां 30,122 ने, यूक्रेन कोल बख्तरबंद गड्डियां 12,303 ने। इसी तरह रूस कोल तोपखाना 7571 है, जबकि यूक्रेन कोल तोपखाना सिर्फ 2040 है।
रूस के मुकाबले यूक्रेन बहुत कमज़ोर है। यूक्रेन का गुआढ़ी देश बेलारूस अपनी आर्थिक और फौजी जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर है। रूस ने बेलारूस को 470 अरब रुपए का लोन दिता है। रूस समर्थक बेलारूस के राष्ट्रपति ने अजे विच हौली हौली पुतिन रूस को सोवियत संघ की तरह मजबूत कर रहे हैं। ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਤੇ ਹਰ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ। पंजाब ते पंजाबियत दा परछावां, पंजाबी साडियां बावां। ABP साझा हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। ABP साझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नूं अज ही संपर्क करो। ABP साझा, जोश, जज्बा, जुनून।